Assalamu alaikum warahmatullahi. Dear students, how are you? I hope that in the Ramzan you all are fine and enjoying the month of Ramadan. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine. Alhamdulillah. So we have 7 participants in the class. 17 लोग आ चुके हैं including me. जी Okay जी, let's start our first topic. Today we are going to discuss or rather complete our previous topic, and the topic which we were discussing is choosing a research topic. And now today we will also wrap up the research proposal. So first of all, I will recap and give you the summary what we discussed yesterday. Yesterday we discussed how to choose a research topic. How can you find a research topic, right? So to find a research topic, this slide is very important. To generate a research topic, to generate research ideas, and to refine a research topic, this is very important. And how can you find the research ideas and then refine then that idea and convert that idea into the topic? Your rational thinking approach and creative thinking approach will help you. These two approaches are used to generate various ideas. Rational thinking basically covers some informal methodologies to generate ideas, right? You look upon your own strengths and weaknesses, you discuss with your colleagues, friends, you review the past projects, and you have discussions, you review the existing literature, you browse the social media. In this way you can generate research ideas, and you can also make these rational thinking techniques more creative, more creative by noting down each ideas and then ranking them. जितने आइडियाज आपको आए उनको नोट डाउन करें और फिर उनकी रैंकिंग करें, टॉप पे कौन सा है, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, एंड राइट. And then relate your personal preferences and review some past projects. Library में जाएं, go to your library, go to the department and search for the projects which have already been done in your area. उनको देखें, साथ ही थोड़ा लिटरेचर पढ़ लें. लिटरेचर पे इंशाल्लाह we will have separate series of lecture, right? So you need to explore the literature. You need to review lot of literature and get the ideas, right? Then relevance tree can help you uh, business, then finance, then the specific area. In this way, you can get the ideas. You can also apply the brainstorming. So by applying the brainstorming technique, you can generate various ideas and suggestions from your colleagues. So this is the summary what we discussed yesterday. You can also apply various techniques to refine your ideas. You can apply Delphi technique. You can contact with the experts of your field. अपने respective teachers जो आपके subject experts हैं उनसे discuss करें and then get the research ideas. You can also get research ideas by conducting the
प्रेलिमिनरी इंफॉर्मेशंस, उस इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन लें, आपके पास जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, ऑनलाइन उनके बारे में पढ़ें, एआई सोर्सेज से पूछें, and in this way you can refine your ideas. Then integrating the ideas, try to connect the ideas, try to connect the specific idea with the broad ideas, right? आपके पास एक जनरल आइडिया है, ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, एम्प्लॉय बिहेवियर, human resource management, functions of human resource management, finance functions. These are general ideas. You can specify these ideas, right? आपके पास स्पेसिफिक आइडियाज भी हैं जी, कंपनी अगर लोन ले तो उससे उसको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, और कंपनी अगर इक्विटी फाइनेंसिंग करे तो उससे बेनिफिट क्या होगा। तो by specifying your ideas and integrating ideas with each others, you can refine your ideas, ठीक है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट आल्सो गिव यू सम रिफाइंड टॉपिक, तो उनसे भी आप काम कर सकते हैं। Ideas, so in this way you can generate various ideas and you can refine them. So up till now, if you have any question, रिसर्च आइडियाज जो हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है, उनके थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट हमने देखे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। Now, after getting some ideas, dear students, our next task is to generate a proposal, a research proposal, right? And up till now, जब आपके पास 4-5 ideas आ जाते हैं, so you have various ideas of your field, marketing, HR, finance, कि आपके पास 8-10 ideas अगर आ चुके हैं, now you can say that you have you are ready to conduct research, you are ready. तो अब आप ये कह सकते हैं, अब आपने क्या करना है, now you need to relate your research idea with research questions. Your next task is to generate a research question. So remember, first of all, you need to generate some key ideas of research topics. उन आइडियाज के बारे में आपने नॉहो लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन लेनी है, उनको रिफाइन करना है, उनका बैकग्राउंड पढ़ना है। तो जब आप उनकी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, नाउ यू नीड टू क्रिएट रिसर्च क्वेश्चन। अब आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे तो पता चलेगा व्हाट यू आर गोइंग टू डू, what you are going to find in your research. You need to write it in the form of question, ठीक है। अभी एग्जांपल भी आती है। So questions may be divided into various forms. Question can be exploratory, question can be descriptive, explanatory, or evaluative purpose. Sometimes you explore something, a new things, and you write question for that, what is. Sometimes you are going to describe something, right? So you write question for the description. Sometimes you are going to explain, you are going to relate one thing with another thing, so explanatory questions आप देते हैं। Sometimes you are going to evaluate something, किसी की परफॉर्मेंस को evaluate करने जा रहे हैं तो आप फिर वैसे ही क्वेश्चन लिखेंगे। and you know very well, questions are written in the form of using these words: what, when, where, who, why, or how. So you need to generate research questions. For example, if you are a media person, media campaign following product recalls, अगर ये आपके पास research idea है, so you can create research question like this: how effective is a media campaign designed to increase consumer trust in ABC company following a series of product calls? So you are going to
write a research questions on your topic. एक क्वेश्चन लिखें, you can generate one question, two questions, multiple questions. If you are HR student and your topic is graduate recruitment via the internet, graduate recruitment, right? Inshallah, you all will get graduate degrees, and after getting degrees, you will be recruited by some employers, local and international. So online अगर आप इंटरनेट को यूज करते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और इस पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका रिसर्च क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है: टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट is internet based recruitment and selection of graduates effective, and why? So how much internet based recruitment is beneficial? So you can create various research questions. अब इस क्वेश्चन का आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में आंसर लिखना है. तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इट मीन्स के यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर रिसर्च फॉलोइंग दिस रिसर्च क्वेश्चन. तो उसकी फिर कुछ फाइंडिंग्स आएंगी नेक्स्ट प्रोसेस पे. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिसर्च आइडिया एंड रिसर्च क्वेश्चन. Now, the research questions are aligned with another step, which is called research aim or research objectives. Now, you are required to write a research aim, a brief statement which will narrate the purpose of your research, the aim of your research, the research objective of your idea, right? तो ये आपने लिखना है. ये कैसे लिखना है रिसर्च आइडियाज, इसकी एग्जांपल देख लीजिए. You have this research question: how effective is a media campaign designed to increase consumer trust? This question was given in previous slide. इसी का आप aim बना सकते हैं. The aim of this research is to assess the effectiveness of media campaign by ABC company designed to increase consumer trust following a series of recalls of its products, right? और अगर आपका ये HR का टॉपिक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूजिंग द इंटरनेट, तो इसका आप रिसर्च एम इस तरह से लिख सकते हैं: द एम ऑफ दिस रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड की बजाय आप एक्सप्लोर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. यू कैन आल्सो यूज द वर्ड ऑफ एक्सप्लेन. द एम ऑफ दिस रिसर्च इज टू एक्सप्लेन situations within which internet-based recruitment and selection of graduates is effective and why. तो वही रिसर्च क्वेश्चन जो है, the same research question is converted into the research aims and objectives, right? Sometimes टॉपिक के बाद जब आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में रिसर्च एम आप पहले लिख देते हैं और रिसर्च क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, राइट? Sometimes it is recommended कि आप रिसर्च क्वेश्चन पहले लिखें और फिर रिसर्च एम लिखें. ठीक है. in both scenario you need to define research questions and research aim. ये दोनों आपको आने चाहिए. ठीक है. और ये इसी तरह से स्टार्ट होंगे. आप एम की बजाय ऑब्जेक्टिव का वर्ड यूज कर लें. यू कैन यूज एनी वर्ड टू डिस्क्राइब योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड देन रिसर्च क्वेश्चन. This slide and two or three more slides will explain a comprehensive example of the research idea and then the research objectives and questions. इन 3 स्लाइड्स को बड़े गौर से सुन लीजिएगा और फिर इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा प्लीज. दिस इज एन एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम अनदर बुक. जो बुक आपको रिकमेंड की है वहां से ये एग्जांपल नहीं ली मैंने. एयरलाइन इंडस्ट्री है. एयरलाइन इंडस्ट्री इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम ये है कि उसके जो एयर जेट्स हैं दे आर आउटडेटेड. न्यू एयर प्लेन जो हैं वो ऑर्डर कर दिए गए हैं, राइट? सो
लेकिन उनको आने में देर है। ये जो पुराने जेट्स हैं इनकी वजह से एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम्स आती हैं, पैसेंजर्स गेट प्रॉब्लम एट द एयरपोर्ट, flights gets delayed because of the outdated airplanes. Frustration is created because of this hassle, and frustration among the airline passengers affect their behavior, and they try to switch from this airline industry to another airline industry, right? So they passengers get angry and they use negative words, in negative word of mouth, negative communication about the airline industry, and this affect the performance of the company and profitability of the company, right? So this is the scenario, और इस पे आपने रिसर्च करनी, राइट? इस प्रॉब्लम को डिग आउट करने के लिए आप लिटरेचर भी पढ़ते हैं, प्रीवियस रिसर्च भी पढ़ते हैं, आप एम्प्लॉय से भी बात करते हैं, आप एक्सपर्ट से बात करते हैं, ठीक है, लिटरेचर पढ़ते हैं और पर्पस ऑफ अपना रिसर्च लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है, इस सिनेरियो को आप इस तरह से समराइज करते हैं। सो यू राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, you describe that problem, what the problem that industry is facing, right? Frequent and long delays, this is the problem which that industry is facing, and because of this problem there is a switching behavior, there is a negative word of mouth, negative feelings, and this affect the profitability or the performance of the company. तो आप लोग, you all need to read the scenario, and after reading the scenario you need to explain the problem in a specific way, ठीक है? After describing your problem you describe research objectives and research question, ठीक है? The purpose of this research, अब आप इस टॉपिक पे, इस एरिया पे, इस प्रॉब्लम पे रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है? और रिसर्च करने के साथ साथ आप अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं किस तरह से। द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज, नंबर वन, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पैसेंजर्स वेटिंग एक्सपीरियंस। नाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब योर एम। आपका एम ये है कि आपने पैसेंजर्स को जो वेटिंग एक्सपीरियंस होता है, वेट करना पड़ता है, उसमें जो फैक्टर्स आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके वेटिंग एक्सपीरियंस को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। Second purpose is to investigate the possible impact of waiting on customer satisfaction. So you are going to explain the impact of waiting on customer satisfaction, consumer behavior, right? फिर आप इन्हीं के क्वेश्चन बना देते हैं। These are research questions which you make from the scenario, from the research objectives. What are the factors that affect the perceived waiting experience? What are the effective consequences of this waiting? And how do situational factors affect? तो इस तरह से आप मुख्तलिफ questions बना देते हैं। इन questions के आपने आने वाले जो टाइम होगा उसमें आपने रिस्पॉन्स करना है। अपनी रिपोर्ट में आप इन ऑब्जेक्टिव्स को, रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, ठीक है? जब आप एड्रेस करेंगे तो आप फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन यू विल एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, practical and scenario based information, and after evaluating that information you basically give some findings, and on the basis of the findings you give some suggestions for the solution of this problem. So this is the problem for which you need to give solution, right? To give solution you define your research objectives and research questions. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी? यहां तक एवरी स्टूडेंट मस्ट बी क्लियर अप टिल नाउ।
right? So you have read a scenario. This is the scenario. After reading the scenario, you define a problem. After defining a problem in a specific way that airline industry is facing the problem और उसके possible effects क्या हैं, and then you write your research objectives and research questions, right? Being a student of BS, if you are doing a research project, और कल को जो एमफिल के स्टूडेंट्स होते हैं या पीएचडी के हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स वेदर एट बीएस, एमफिल और पीएचडी लेवल, they have to do this task. They have to conduct this task. So every student must learn how to define the problem and then how to write research objectives and research questions. Up till now, if you have any question. Ji, dear students, if you have any question. No questions means everything is clear. Thank you so much. And next thing is very important. That is theory. Being a business student, you have studied a lot of theories relating to your field, relating to the organization, to the human resource function of the organization, to the employees, to the marketing functions of the organization, to finance, accounting. बेशुमार theories आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, अपने अपने फील्ड से रिलेटेड. सो रिसर्च में थ्योरी हैज वेरी significant place in research. Whatever you have done previously, you need to relate this task, this research problem, objective and questions. जो टॉपिक आपने चूज किया है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर अगर आपका टॉपिक है, फ्रस्ट्रेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर आपका टॉपिक है जो कि सिनेरियो में निकल रहा है, तो आपको उसकी थ्योरी फाइंड आउट करने की जरूरत है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अब थ्योरी क्या होती है पहले डिफाइन कर लेते हैं. थ्योरी इज अ टर्म रेफर टू a systematic body of knowledge grounded in empirical evidence which can be used for explanatory or predictive purposes. So there is an empirical evidence grounded in your area, in the body of knowledge of your area, and that empirical evidence explain some kind of relationship, ठीक है. That relationship can be related to the employees of the organizations कि कैसे behave करते हैं, student of the university, students का behavior आमतौर पे क्या होता है, ठीक है. स्टूडेंट्स को अगर आप ऑफलाइन क्लास पढ़ाएं तो बिहेवियर क्या होता है, ऑनलाइन क्लास पढ़ाएं तो बिहेवियर क्या होता है, स्टूडेंट्स को अगर आप वर्कलोड ज़्यादा दे दें तो उनका बिहेवियर क्या है, एम्प्लॉयज़ को वर्कलोड बढ़ा दें, कम कर दें, सैलरी ज़्यादा दे दें, सैलरी कम कर दें, तो इससे उनका बिहेवियर क्या होता है. इस तरह के कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं विच आर डिफाइंड इन द टेक्स्ट, और उनको एक नाम दिया होता है. दैट नेम, दैट जनरलाइज्ड रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ थ्योरी. जनरलाइज्ड रिलेशनशिप, ये वर्ड याद रखिएगा, राइट. सो थ्योरी इज अ स्ट्रक्चर्ड set of interconnected ideas, constructs and variables used to explain, predict or understand phenomena. Constructs, ideas, variables to explain, predict or understand. If you want to understand a phenomena, if you want to understand student behavior, तो किसी रिसर्चर ने दुनिया में स्टूडेंट के बिहेवियर पे बहुत काम किया होगा और उसने कुछ फाइंडिंग्स दी होंगी, उन फाइंडिंग का उसने एक नाम रखा होगा, राइट. दैट इज अ थ्योरी. दैट्स अ थ्योरी, राइट. अ जनरलाइज्ड रिलेशनशिप which explain a certain phenomena, उसको हम थ्योरी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सब ने you all have heard Maslow theory. Maslow theory of needs. Maslow theory of needs explains various levels of needs.
ये आप सब ने पढ़ी होगी, राइट। लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन होती है, राइट। So you starts from the basic needs, physiological needs, and then comes the psychological needs, and at the top you have some leadership needs, right. इस तरह से मैस्लो थ्योरी जो है वो नीड्स को एक्सप्लेन करती है, राइट। and if you are an employee, you apply Maslow theory in the employment context. फिर इसी तरह से बिहेवियर से रिलेटेड आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी होंगी, मसलन टीपीबी एक थ्योरी है, टीपीबी, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, theory of planned behavior. So this theory talks about the behavior of the employee, behavior of the students, behavior of the human being in certain context. How do we plan our behavior? Our actions are based upon our intentions. जैसा एनवायरनमेंट होता है हमारा वैसे एक्शन हो जाता है। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है ना वो बात करती है। और अगर आपका टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर है तो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर जो है वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंस में एजेंसी थ्योरी यूज होती है। एजेंसी थ्योरी टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑनर, शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज। owners and shareholders. Shareholders work for the benefit of owners. Sorry, employee work for the benefit of shareholders. तो एम्प्लॉय ने हमेशा जो है ना शेयर होल्डर्स के लिए काम करते रहना है, ठीक है। इस थ्योरी को एजेंसी थ्योरी कहते हैं। जब वो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। तो इस तरह से देर आर वेरियस थ्योरीज। तो आप जो भी टॉपिक चूज करेंगे, एवरी टॉपिक will have certain types of theories, ठीक है, जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे होंगे। तो आपने उन थ्योरीज को फाइंड आउट करना है। अब अगर थ्योरी देखिए, यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं रिसर्च में, हमने इन दो में से एक अप्रोच को यूज करना है। अगर तो आपके टॉपिक से रिलेटेड पहले से ही थ्योरी मौजूद है, राइट, तो उस थ्योरी को आप लोगों ने टेस्ट करना है। If you are going to study human behavior, employee behavior या consumer behavior, और consumer behavior से related पहले से theory चली आ रही है, and you are going to study that theory, you are going to test that theory, right? So this approach is called deductive approach. In research, we call this approach a deductive approach, that you are not going to generate a new theory, you are going to test the already existing theory. This approach is called deductive. Deductive means you are going to extract a finding based upon a given relationship, ठीक है जी। तो आप एक जनरल रिलेशनशिप से एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप निकालते हैं। You start from a theory and you test that theory in Pakistani context. So from general to specific, this is called a deductive approach. And second one is the inductive approach. Inductive approach is basically you are going to explore a new topic. You are going to develop a new theoretical explanation. You are going to generate a new theory. A theory, a relationship, an idea which does not exist previously. आप एक ऐसा नया रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर थ्योरी जनरेट करने जा रहे हैं तो इट मींस यू आर फॉलोइंग इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। रिसर्चर्स ने इन दोनों में से एक अप्रोच अडॉप्ट करनी होती है, याद रखिए। 95% चांसेस होते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के कि दे अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच, बिकॉज जो ऑलरेडी थ्योरी होती है उसी को ही टेस्ट कर लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच पे थ्योरी जनरेट करना बहुत टफ काम है, मुश्किल काम है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
लेकिन ये डिफिकल्ट काम एक नई थ्योरी लेके आता है, फिर पूरी दुनिया में वो थ्योरी पढ़ाई जाती है. वेस्टर्न वर्ल्ड and the Western text is beyond our research. Beyond our research means they focus on inductive approach to generate new relationships. जी हमारा क्या कहना है? Yes, Humera, do you want to say anything? कुछ नहीं सर, वो मैं देख रही थी इससे क्या होता है. Okay, जी. That's all for today. Till the deductive approach and inductive approach. So let me summarize what we have studied so far. We must be able to generate various ideas, research ideas, right? How the research ideas will be generated, uske liye we have a rational thinking approach, we have creative thinking approach to generate various ideas. We need to refine that idea. जब हमें topic मिल जाता है तो we need to write research questions, and research questions के साथ साथ we also need to define research aim. ठीक है, और उसके लिए आई हैव डिस्क्राइब दिस एग्जांपल. इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, बिकॉज दिस एग्जांपल समराइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट which comprises of problem, objectives and research questions. And theory क्या होती है? Theory is a generalized relationship. Sometimes हम theory generate करते हैं by following the inductive approach. Sometimes we test the existing theory by following the deductive approach. So that's all for today. If you have any question, you are most welcome. Otherwise, let's have attendance for today's class. जी. अटेंडेंस लगा लें. Yes, sir. Okay, let's have attendance. I will upload the recording of this lecture, and then we'll share with you, ठीक है, the link of that recording. आप सबकी मुझे फेवर चाहिए होगी कि इस क्लास में 29 लोग हैं, बल्कि अटेंडेंस का टाइम थोड़ा है. आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट द क्लास. इसको रीज्वाइन कर लीजिए, एंड फिर हम अटेंडेंस लेते हैं.